और दोस्तों, जिस तरह की आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। सोनम साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me. थैंक यू। आज एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो सोनम साहिबा आपसे डिस्कस करने हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि रिसेंटली अगर आपने नोट किया होगा कि भारत की जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली 3 स्टार जनरल ने स्टेटमेंट दी कि हम आज़ाद कश्मीर किस वक्त भी ले सकते हैं अगर हमें सरकार कहे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, सब ने बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी कश्मीर को लेकर के। एनी हाउ, देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान। ऑब्वियसली छोटा मोटा रिस्पांस आया, लेकिन लीडरशिप लेवल पे रिस्पांस नहीं था। अभी हाल ही में, कल परसों, पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने दौरा किया LOC वगैरह का, और वहाँ पे उन्होंने जो बात की सेंट्रल, उन्होंने कहा जी कि हम रेडी हैं, जो लड़ाई है बैक टू द एनिमी स्पेस, हम वहाँ पे दुश्मन की जो स्पेस है उसमें लेके जाने को जो है हम बिल्कुल तैयार हैं। सो बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको ये समझ रहा हूँ शायद कि एक वक्त था कि जैसे ऑफेंसिव डिफेंस ऐसी स्ट्रैटेजीज आई कि भाई अगले मुल्क में जाओ, वहाँ पे जाके प्लान आउट करो और वहाँ पे उनको एंगेज करो, जो कि शायद अजीत डोवल साहब की स्ट्रैटेजी है। सो आप इस सारे पे राय में जो है आसिम मुनीर की स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं, जो नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं? जी। Let me begin this conversation with first of all congratulating you. You got a new general manager. I hope he steers Pakistan clear of all its political turmoil and the new wave of emerging terrorism. Um, to come to his statement, आपने सही फरमाया बिल्कुल कि इंडिया से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, बट आपके यहाँ से उसकी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था लेटली। तो आपके लिए हो सकता है कि अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हों, बट इंडिया की ये स्टेटेड पोजीशन है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and sooner or later POJK will be taken back. Now I know many Pakistanis would say that जब कहीं पे elections होते हैं तो इस तरह की statements जो हैं वो ज़्यादा issue होती हैं. I agree because this is an issue that many people are interested in. दोनों ही तरफ जो है कश्मीर को लेके काफ़ी लोग interested रहते हैं, and Jammu Kashmir has forever been living under the shadow of foreign jihadi terrorism. So it does impact people's lives, not just the political class. लोगों को भी इसका solution का इंतज़ार है, and लोग expect करते हैं हुकूमत से कि हमें बताया जाए कि इसका क्या future है। बहुत सारी families हैं जिनकी आधी families दूसरी तरफ हैं. So it is impacting people in so many ways. So I think the Indian leadership will continue to talk about it. And I know इसके बारे में lately ज़्यादा बात हो रही है, but I am not privy to that information कि अगर there is actually a plan और कुछ offensive करने की कोई तैयारी हो. But talking about your general, of course अगर वो LOC जाएंगे तो कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? इनफैक्ट हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में ही कुछ ऐसी इस तरह की शुगली को छोड़ेंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया उनकी तरफ से, बिकॉज इफ यू आर अ पाकिस्तान आर्मी जनरल एंड यू डोंट टॉक अबाउट कश्मीर, आर यू रियली अ पाकिस्तान आर्मी जनरल? So, that's a matter of existence and relevance for the Pakistan Army leadership. So, they will continue to issue statements, and we will look at those statements as mere statements, and that's about it. तो मैडम, आप इसको कैसे समझती हैं? ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एक ही मुल्क को दुश्मन समझता है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली इंडिया। जब ये कुछ अरसे से ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि इन जो है वो इंडियन आर्मी को कहा जाएगा अगर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी तो हम जो है वो कश्मीर को वापस ले लेंगे। सो बहुत सारे हल्के कहते होंगे भाई इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अच्छी इकोनॉमी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े पॉपुलर हैं, तो देर किस बात की है? क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते? क्यों अटैक नहीं करते? क्यों आप समझती हैं, या आप समझती हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है? आप समझती हैं जस्ट टू बी रेलिवेंट होने के लिए, या आप समझते हैं कि ये फौज को जरा खून गर्म करने के लिए, या वो फिर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जो राइट विंग
हिंदू रिलीजियस नेशनलिज्म है उसको लेकर के करते हैं, या कि आप समझते हैं कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसे हो सकता है? एंड इन केस मैडम अगर ऐसे होता है तो आप क्या समझती हैं जंग फिर कहाँ रुकेगी? मतलब ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन होगा ना, अगर जनरल साहब जिस तरह उन्होंने कहा, आई थिंक जनरल द्विवेदी ने कहा, तो आप क्या समझे किस चीज की देर है? क्यों नहीं इंडिया समझ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी वीक है, पॉलिटिकली भी पोलराइज्ड है, सो आए देखते हैं, मतलब एटलीस्ट दे शुड बी स्टार्ट ना, तो देर किस चीज की है इंडिया के अंदर? I would say don't ask for what you are not prepared for, okay? So खुदा का नाम लें, ऐसी चीज़ों की आप ज़्यादा ख्वाहिश ना रखें. Again, I mean, it is for the Indian leadership to decide कि वो कब क्या करना चाहेंगे ना. It's not for the Pakistanis to decide कि इंडिया कब क्या करे. आप दावत दे सकते हैं ज़रूर इंडियन आर्मी को. आप पहले भी चाय वाय पिलाते रहे हैं. You're good hosts. But again, it's for the New Delhi to decide when do they want to take a call. Again, this is not a Hindu nationalist issue, okay? Kashmir is a core issue in India and it impacts people from all walks of lives and irrespective of their religion, creed, and all of that. This is not to do anything. This has got nothing to do with BJP's politics. This was pretty much an issue when the Congress party was also in power. Okay, to relate this with BJP's politics, I would say it's a bit of an overreach. Um, and yeah, you're right. Both of us are nuclear powers. The stakes are pretty high. But like I said, I'm not privy to that information, right? कि वो हमारी क्या तैयारी है and what is that the political leadership of this country is thinking कि इसमें से what are they eventually going to gain out of it? Of course, if we get the POJK back, it is a major strategic advantage for us. And otherwise, also, I mean, it's also an emotive issue in India. But I agree with you when you say the stakes are very, very high, and this will lead to a lot of bloodshed and a lot of more violence. But then otherwise भी तो violence जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है ना. तो it's like, you know, in people in India also are like यार end this for once and all. इसको अब ख़त्म करें, ये जो मसला इतनी देर से दोनों के बीच में है. अगर बातचीत से इसका मसला जो है ये हल नहीं हो सकता, तो देन व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायलॉग कर लें या तो फिर आप वॉर कर लें. एंड समटाइम्स वॉर इज़ द ओनली ऑप्शन टू अटेन पीस. अच्छा मैडम, ये बताइएगा, रिसेंटली पाकिस्तान और भारत की अफवाज ने, इंडियन मिलिट्री एंड पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत अच्छे मिलिट्री सीबीएम्स जैसे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स अचीव किए, जिसमें 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको मटीरियलाइज किया। और आप देखें कि एलओसी के ऊपर ना भारत की तरफ से कुछ हुआ ना पाकिस्तान की तरफ से हुआ। इट मीन्स दोनों ने बड़ी मेच्योरिटी शो की है। सो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम मिलिट्री सीबीएम्स करके एक जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे कुछ भी हो, कोई ऐसी बात वो नहीं हो रही, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई, जो ऑफेंसिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं फॉर एग्रेशन एंड ऑल दैट। आप क्या समझती हैं इंडिया का जो इंडियाज राइजिंग पॉलिटिकल स्टेचर, इकोनॉमिकली मोर रेलिवेंट, ग्लोबली रीजनली मोर रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू क्वाड, सारी दुनिया इंडिया आ रही है, आप समझती हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग जो है इंडिया के फेवर में होगी इस सर्कमस्टांसेस में? देखिए, ये तो आप तब तक नहीं कह सकते जब तक जंग होगी. एंड यू हैव टू मेक योर कैलकुलेशंस एंड आई एम श्योर न्यू दिल्ली हैज़ इट्स कैलकुलेशंस इन प्लेस. Talking about Pakistan in particular, you have to understand Pakistan has a huge turmoil of its own. And India is, of course, today very less self conscious of its actions. The Indian mentality has also evolved, it has come a long way. When you want to kind of break out, you know, we have like very large goals ahead of us. You know, right now we are heading the G20 presidency as well. So I think there is more confidence on the Indian side today. And of course, the Pakistani situation is not helping the cause anyway, right? It is your internal turmoil, your own weaknesses are certainly a motivating factor. So uh, while and none of us would like a war, but end of the day हर country का अपना एक narrative होता है, हर country के अपने objectives होते हैं.
एंड अगर आपको वो अचीव करने के लिए यू हैव टू गो टू लाइक ग्रेट लेंथ्स एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, देन वी हैव सीन मेनी कंट्रीज गो टू वॉर। एंड ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। एंड यू आर राइट कि आर्मीज के बीच में एक सीज फायर पे अग्रीमेंट हो गया था, but the infiltration bids have not really stopped. I mean, they are not to that level, but there is still infiltration happening, and there have been drops of ammunition and drugs via drones. Now the Pakistani media will say कि ये सब झूठ है and ये है, but you know your reality, right? In India we take these things very seriously, and every country should. So while you may believe कि LOC पे peace है, yes, largely peace है, but it's not just the Indian leadership which is talking about Kashmir, right? I mean, even your foreign minister, any of your delegation that goes abroad, they rake up Kashmir all the time. Do they not have that realization that the army generals are talking to each other? So I think it's pretty much happening on both the sides. And I don't see it as something unnatural or something provocative or aggressive. This has been Indian position forever, that POJK sooner or later will be a part of India. अब उसके क्या stakes हैं क्या नहीं है, this is for the people who are into the business to decide, and not me and you. बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मैडम, ये बात भी बताइएगा कि रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो जो हमने सुना फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंडियन स्टेट गवर्नमेंट एंड एनवायरनमेंट, कि इंडिया के जो बड़े चैलेंजेस है वो इंटरनल हैं। कभी रेड कॉरिडोर की बात की जाती थी, रिसेंटली चाइना की बात हुई कि इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, बिकॉज चाइना वाकई ऑब्वियसली मिलिटरली इकोनॉमिकली बड़ा पावरफुल मुल्क है। आप क्या समझते हैं जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स चाइना के बारे नहीं आती, दे बड़े वेरी केयरफुल रहते हैं जब चाइना की बात आती है? क्या इकोनॉमिक डिपेंडेंस है इंडिया की चाइना के ऊपर? बिकॉज अभी भी कोई 100+ बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स होती हैं चाइना से। या क्या आप समझते हैं कि अगर हम चाइना से के साथ कोई ऐसा एग्रेसिव पॉस्चरिंग होती है तो उसका नुकसान है एट दिस मोमेंट? बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को यूज़ करना चाहता है एज ए टूल, ताकि वो कहीं पे कोई इंडिया चाइना के मामलात हों जिस तरह यूक्रेन रशिया के हो गए, तो बीच में जो है ना सारा वो देखते रहेंगे। सो आप इसमें ये पॉलिटिकल रेटरिक में चाइना डजंट फॉल, खौफ है, डर है किसी किस्म का कि कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, या कि आप इंडिया चाइना को लेकर के बड़े केयरफुल हैं और स्टेटमेंट्स बड़े ध्यान से दी जाती हैं? देखिए, पहले तो आई विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इट्स नॉट जस्ट द इंडियन डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज, दे आर आल्सो मेकिंग होल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स, राइट? And in fact, जब दिवाली में last year, people were not buying Chinese goods. There was a lot of reaction from the Chinese side. The Global Times, which is the mouthpiece of the CCP, they literally had articles written and they were cribbing about it. So the economic dependence is not like one-sided. Lately, that has also changed a lot, because we are not really importing, too many products from China. We are kind of trying to import more and more components so that we can build right in India here. And even लोगों में भी एक वो activism है अभी कि हमें किसी भी जो adversary है उससे ज़्यादा goods नहीं खरीदने हैं. So I think we are working on that. Now coming to the other point where you're saying कि China का कोई India में नाम नहीं लिया जाता and all that. There are multiple reasons to it. First of all, I don't think कि पाकिस्तान के साथ भी कोई नाम ले लेके किसी की कोई बात करते हैं. आपके जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, वो नाम ले लेके पर्सनल अटैक्स करते थे. आई डोंट थिंक इंडिया में भी पाकिस्तान को लेके जो है कोई पाकिस्तान का नाम लेके बात होती है. लास्ट टाइम भी जब आपुर में बैठे थे, वी हैड अ डिस्कशन एंड यू वर सेइंग कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने टेररिज्म की बात की, तो उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान को. तो इस तरह से तो हम लोग एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस की भी बात करते हैं, ऐसी फोर्सेस की भी बात करते हैं जो हेल्थ इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फैलाते रहे हैं लेटली. तो एवरीबडी नोज हु यू आर टॉकिंग अबाउट. यू डोंट रियली हैव टू गेट पर्सनल. वी डोंट डू दैट विद एनी कंट्री. Thirdly, India is not Ukraine. I don't know which circles you are in, and आपको लग रहा है कि कुछ circles में ऐसी बातें भी हैं कि जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में जंग हो,
और फिर जो है हम बैठ के पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं. I don't think that will ever happen. India is too prudent of a country to take such aggressive or you know impulsive decisions. And एक चीज़ और भी है जो मुख्तलिफ है. इंडिया और पाकिस्तान की जो इक्वेशन है और इंडिया और चाइना की जो इक्वेशन है उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो भी हमारे बीच में है हम वी आर स्टिल एंगेजिंग इन डायलॉग्स. हमारे 16 राउंड्स हो चुके हैं अभी तक कोर कमांडर्स के बीच में जो हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है. एंड हमारे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है. इट इज़ नॉट लाइक अ सिविलाइजेशनल वॉर या उनका कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हमने कोई गजवाए हिंद करना है तभी हम आराम से बैठेंगे. It is not a civilizational war that the two countries are fighting, and you got to also see that the Chinese have a credibility problem. You know, they are across the world seen as a country which is kind of instrumental in spreading health insecurity, global insecurity, economic insecurity. They've wreaked havoc on global economy, you know, by not uh, having to tame the COVID crisis and keeping things very discreet. So and they have also impacted the global supply chain in a manner that that it has literally necessitated that we look at an alternate global supply chain now. So the Chinese are not just a pain in the in the wrong place for just the Indians. They are pretty much a pain for the whole of the world, and that is why you see any global forum you go to, the Chinese are being talked about, and they're not being talked about in a very positive manner, I'm afraid. So we are engaging with them, and we do understand कि हम जो ऐसा नहीं है कि जो Chinese लोग हैं they are very anti India या फिर इंडिया में इस तरह के चाइना के लोगों को लेके एक सेंटिमेंट पाया जाता है. It's a conflict between two countries at a very strategic level, and the governments are engaging, the armies are engaging, and I think we will be able to resolve this in a more mature manner. मैडम आपने चाइना की जो इंटरनल डायमेंशंस हैं कि वो डिस्क्रीट हैं, चीज़ें छुपाते हैं, बड़े हार्ड हैं, एक इस तरह का उनका माइंडसेट है, ये तो रशिया का भी है. तो रशिया तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का. और पूरा वेस्ट शोर मचाता रहा कि भाई आप जो है रशियन ऑयल से बेनिफिट उठा रहे हैं. यार वेस्ट भी बेनिफिट उठा रहा है, वो आप अकेले तो नहीं उठा रहे, लेकिन इंडिया तो बड़ा जो जिसे कहते हैं ना वो रशिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला. लेकिन चाइना जो है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया डिपेंडेंट है फाइनेंशियली. ठीक है, उनका पॉलिटिकल मॉडल हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं पसंद. आई एम वेरी मच अनकंफर्टेबल जो वो चीज़ें करते हैं. इस तरह तो सऊदीज भी हैं, अरब्स भी हैं जो आपके नए दोस्त अभी बन रहे हैं. तो ये तो कोई चीज़ ना हुई कि जी वो डिस्क्रीट चीज़ें रखते हैं, डिस्क्रीट तो सारी दुनिया रखती है. इस तरह तो फिर आप रशिया पे क्यों नहीं टारगेट कर रहे, आप चाइना पे क्यों कर रहे हैं? आपका अपना प्रॉब्लम है चाइना के साथ, तो आप इतना वेसिफोरसली इतना एक्टिवली चाइनीज को करें. दुनिया तो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन. जब जब इतनी ज्यादा जो बूम आया दुनिया में, हमें अच्छा लगे ना लगे, तो बहुत सारे मुल्कों में बूम चाइना की वजह से आया. आज वो जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए मुल्कों को अपने नीचे लेके आने के लग रहे हैं, वो एक और चीज है. लेकिन लार्जली ग्लोबलाइजेशन का फायदा तो उन्होंने उठाया. तो आप नहीं समझ रहे, आप भी एक तरफ फायदा भी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बैशिंग भी कर रहे हैं. जबकि रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला करता है, उधर आप जो है वो साइड पे बैठ जाते हैं. यही काम अगर चाइना ताइवान पे करे तो आप उठ खड़े होते हैं. सो डोंट यू थिंक दिस इज जस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इवन विद इंडिया एंड विद एनीवन एल्स एज वेल? What exactly is the question? It was more like an analysis. What is it? मैंने What मैंने exactly is the question? मैंने क्वेश्चन किया, आपको समझ नहीं लगी, मैं दोबारा बता देता हाँ, मुझे शायद नहीं हूँ. लगा. मैं हाँ. मैं बता देता हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं. देखिए, एक तरफ चाइना है और एक तरफ रशिया है. जी. रशिया अगर एग्रेशन करे यूक्रेन पे, आप खामोश हैं. हम्म. अगर चाइना कुछ इस तरह की चीज करे, आप कहती हैं बड़ा डिस्क्रीट है. तो रशिया का मॉडल भी तो डिस्क्रीट मॉडल है. कुछ समझ आ रही है Can वहां I पे क्यों आ रहा answer? है इंटरनली? ठीक है, I सिंपल got सी your बात. question now. Of नहीं, course. मैंने ये पहले भी पूछा था. सो मैं सिर्फ नहीं, इतना आपने कह पूछा रहा था, हूँ. बट आपने साथ में कुछ तर्जिया भी किया था, which is of course your choice. एक सेकंड, एक सेकंड नहीं. ठहर, एक सेकंड जी. ठहर जाइएगा, मैं जरा इसको दोबारा एलैबोरेट कर लूं. मैं नहीं, तो नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात समझ गई हूँ. आप मैं शायद बता देता हूँ ना मैडम, तो एक हम सेकंड. कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर-उधर बड़ा नहीं, चले मैंने जाएंगे. ये आपके कहा क्वेश्चंस मैडम, बड़े ट्रिकी होते हैं. आप लोडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, अपना एजेंडा बहुत धीरे से स्लिप इन कर देते हैं. लेट मी आंसर नाउ, ओके? मैडम मैंने कोई एजेंडा नहीं दिया, मैंने तो चलिए, कोई आपकी बात नहीं. ओके, डिस्कशन से ओके. ही आप फिर से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं. नो प्रॉब्लम. जी, जी. गो अहेड.
मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो देखिए, मैं चाइना को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं रशियंस को भी कर रहा हूँ। मैं जी, तो एक जी। बड़ी ओपन सी आप फॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में। आई विल कम टू दैट पहले बट आप प्लीज़ कंप्लीट मैं करें। वो डिस्कशन इधर उधर होगी, लेकिन मैं दोबारा यही बात कर देता हूँ। जी, जी। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपने चाइनीज डिस्क्रीट जो जी बड़े छुपे हुए हैं, ये है वो है, वो तो रशियंस भी करते हैं, उनका भी ये ऐसे ही तो है। समझ गई सिर्फ मैं। आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं तो आप खामोश हैं। उधर चाइना जो है वो आपका आजकल एलओसी पे मिसाइल है, वरना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जफ्फी डालने में कोई शी जिनपिंग को कमी तो नहीं छोड़ी थी 18 जी। मुलाकातों में, लेकिन वो जादू की जफ्फी चली नहीं है। तो ये मेरा था कि रशिया में आप जो है वो खामोश हो जाते हैं, चाइनीज कुछ करें तो आप शोर डाल देते हैं। सो मैं इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा बात तो नहीं करता। देखिए, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिट ऑफ अ हिपोक्रेसी हियर, आप कह सकते हैं। आप भी जो है वो पैलेस्टाइन पे बहुत शोर शोर मचाते हैं और शिनजियांग में आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। सो एवरीबडी हैज देयर ओन हिपोक्रेसी, बट आई थिंक यू आर क्लियरली ड्राइंग फॉल्स इक्विवेलेंस बिटवीन द रशियंस एंड द चाइनीज। बोथ आर कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट अगर आप आज दे आर एट लॉगरहेड्स विद द वेस्ट, इवन तब भी जो वेस्ट है वो आइडेंटिफाई किसको कर रहा है? चाइना को कर रहा है एज द मेन थ्रेट फॉर देम, नॉट द रशियंस। रशिया को वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं समझता जितना वो चाइना को समझते हैं, एंड द रशियंस हैव नॉट बीन स्प्रेडिंग health insecurity. I know they have weaponized essential supplies, they have weaponized the energy supplies lately, and the world has suffered because of this conflict. But आप इन चीजों को इतना ओवर सिंप्लीफाई करके नहीं देख सकते. There is a whole context to what is happening between the Russians and the Ukrainians, and there are different stakeholders to that. And of course हम रशियन से एनर्जी सप्लाईज लेते रहे हैं, यूरोप भी लेता रहा है, हम भी पैसे दे के लेते रहे हैं. आपने भी लेटली अभी 3-4 दिन पहले कोशिश की थी, बट उन्होंने आपको देने से मना कर दिया, तो वो तो हमारा कसूर तो नहीं है ना. तो अगर वो आपको डिस्काउंट पे कुछ नहीं देना हमारे पास चाहते तो हैं. पैसे ही नहीं है मैडम, सीधी सी नहीं बात नहीं, करनी आपने भी चाहिए। डिस्काउंट पे मांगा था. आपके जो हमारे पास तो पैसे नहीं है, सीधी सी नहीं, जो बात है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया का हवाला दे रहे थे कि अगर इंडिया को इतने डिस्काउंट पे रशियंस ने तेल दिया है तो हम भी ले सकते हैं. उन्होंने 30-40% डिस्काउंट पे मांगा था. तो द मॉस्को द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन मॉस्को, दे सेंड देम बैक. उन्होंने बोला कि सॉरी, ये नहीं हो सकता अभी. तो ये तो हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर आपको लोग वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जो वो इंडिया को दे रहे हैं. जी एंड G, and I have no qualms to accept it. Ki Russians have been one of our, allies, and they still continue to be an ally. In fact, right now they're having a festival in New Delhi, and we are, heading the G20 right now. और आपको पता है that India has to literally walk a diplomatic tightrope here, to navigate its interests. And आपको पता है G20 में again there are like so many countries which have their own vested interests. But आप देख लें, we are somewhere able to have good relationship with everybody, and have our allies understand us. हमारी Palestine पे भी एक position है, and the Israelis understand it. So you got to give it to India for that, okay? The Israelis know that, okay, आपकी ये position है, they are still our friends. The Americans know that we are buying oil from the Russians, they are still our friends. And you got to maybe learn a thing or two from us, instead नहीं of नहीं, being बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। all the time and be so grumpy, and that's not how you do it. नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो ये समझता हूँ सीखना चाहिए इंडिया से बहुत। देखिए, जो चीज़ जी. अच्छी, जो चीज़ किसी में भी अच्छी हो सीखनी चाहिए, इसमें कोई तंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे इंडिया की ये Absolutely. बात अच्छी लगी कि चाइना के साथ मिसाइल भी है लेकिन कारोबार भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, यही होना आगे भी चाहिए। होगा. जी, आगे भी होगा, वो नहीं होता नहीं, ही मुझे पता रहेगा. है, वो मुझे पता है, वो चाइना ने जो भी आपके साथ किया, कारोबार करेंगे आप। लेकिन ये है हमने कि भी मुझे उनके साथ बहुत कुछ किया, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ अकेले कुछ नहीं किया, हमने भी उनके साथ बहुत कुछ किया है. बट वो थोड़े जस्ट डिस्टेंस है. बट अभी आपको पता होगा ना वहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो आप अपना भी ध्यान रखें थोड़ा. नहीं, हमारे तो देखिए मैडम, हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं और वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे वो सॉल्व करने हैं। हम आपके एक बार मसाइल भी बहुत है, बट आपके पास ना ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा है. देखिए मैडम, ओपिनियन फ्री स्पीच है। वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी है, फ्री। हम भी सो कॉल्ड जैसी भी हैं ऐसी हैं, डेमोक्रेसी तो है, फ्रीडम तो है ना। हम लोग भी बात, तो ओपिनियन रखना तो हमारा हक है ना, ये तो हमें ना जी. दबाया जाए प्लीज।
एंड कमिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, आप हमारी ओपिनियन को तो थोड़ा सा अलाउ करें हम कि हम अपनी ओपिनियन जो है वो रख सकें जैसी भी हो। मैडम, कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन G20, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज टॉकिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, जो सेंट्रल चीज़ है दैट इज क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। उधर चाइना भी ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। हाउ कम इंडिया कैन टॉक ऑफ ग्लोबल साउथ जबकि विद इन द ग्लोबल साउथ बहुत सारे लोगों का, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे प्रोफेसरों से मिलता हूँ तो बातें होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जो, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज कि इंडिया का जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो पाकिस्तान है, उसके साथ तो मसाइल अच्छे नहीं है इंडिया के, ठीक है। सो कभी वो हमें FATF में फंसा के रखने की कोशिश करते हैं, कभी जो है वो और किसी चीज़ में कहते हैं कि यार इनको जो है नहीं निकलने देना, इनके जो है ना वो अपना अपना पर्सनल एजेंडा सेटल करना है। आप समझते हैं कि एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात करना जी, कि ग्लोबल साउथ में जितने ममालिक आते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, बाकी भी एशिया पैसिफिक में, उधर लैटिन अमेरिका में भी, सबकी बात करना चाहता है, लेकिन हाउ कम जो है वो इंडिया वो पाकिस्तान के साथ इतना जो टफ एनवायरनमेंट रखा हुआ है, और जैसे स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ग्लोबल साउथ की जब बात करनी पड़ेगी तो सबकी बात करनी पड़ेगी? फिर ये नहीं है कि आप एक मुल्क को निकाल दें, एक के ऊपर टफ लाइन लें, और फिर इसी तरह छोटे मोटे और जो मुल्क हैं, जैसे कभी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। सो इंडिया को वो एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी फॉर टेकिंग दैट लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंडिया इज एट पार और इज ट्राइंग टू कम्पीट विद द चाइना व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, और इसको पोलिटिसाइज करने में भी इंडिया ने अपना ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है। सो आप इसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान के साथ टफ, लेकिन वैसे एजेंडा ग्लोबल साउथ का लिया है? पाकिस्तान ने कहा एनवायरनमेंट का मसला है, इंडिया बोले ही नहीं उसमें, तो इसमें भी जरा काइंडली थोड़ा सा एजुकेट करें। देखिए, वी लुक एट पाकिस्तान एज अ डिस्ट्रक्शन, एज अ डिस्ट्रैक्शन, सॉरी, डिस्ट्रक्शन भी वो वैसे आपके दिल गलत की होगा बात सामने आ गई कि जी, जी। डिस्ट्रक्शन ही हो जाए इनकी, तो है। डिस्ट्रक्टिव पावर भी कह सकते हैं वैसे, बट वी डू लुक एट पाकिस्तान एज अ डिस्ट्रैक्शन. We don't look at Pakistan as a player. You may not like my opinion, but I'm just trying to echo what we hear here in New Delhi. बिल्कुल सही। Uh, जी जी, उसके जो बहुत सारे जो उसकी वजूहात हैं, वो आई थिंक वो आपको अंदर झांकने की उसकी ज़रूरत है, कि अगर आपको अगर अफ़गान तालिबान जो एक टाइम पे आपकी इतनी बड़ी एलाइज़ थी, अगर वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो आई थिंक it's a bit hard on India on your part to expect the Indians to take you very seriously. ठीक है, you got to really put your house together. एंड पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये भी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब आप ये कहते हैं कि रीजन की बात करते हैं. आई मीन, पाकिस्तान इज वन कंट्री विच literally stonewalled, so many projects of SARC. लास्ट जब उनका समिट था, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने शर्त लगा दी कि जी आप तालिबान को बुलाएं और आप जो है मेक श्योर कि कोई भी जो अर्स्ट वाइल अफगान हुकूमत जो थी उसका कोई मेंबर वहाँ नहीं आना चाहिए. When you don't have your priorities sorted, I think the world is not going to sit and waste time on you. I think that realization has dawned upon India that this is a distraction. Leave them alone. We have issues with them, outstanding issues with them. We will solve them at our own discretion. Um, Talking about global south, I know India is making efforts to be the emerging face of the global south, and the world is really buying that. You cannot just say कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दुनिया ऐसा नहीं समझ रही है. uh, uh, See, one reason is also that the Chinese are so unilateral in their approach, and India as a country is very 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 multilateral, and we believe कि जो हमारा जो खिता है, there is so much world population which is living in this part of the world. तो हमारी जो representation है overall, जो अगर आप देखें, वो इतनी अच्छी नहीं है. अगर आप देखें जो at the forums like the UN and UNSC, so of course we have our own vested interest, and we have big goals ahead. And आप ये भी देखें कि जब दुनिया पूरी जो है एनर्जी क्राइसिस से लड़ रही है, फूड क्राइसिस से लड़ रही है, इंडिया में ये दोनों क्राइसिस नहीं है. वी आर लिटरली द फूड क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड. And even as the chairperson of the G20, the chair of the G20, we have our priorities pretty sorted here. Uh, तो ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, सो प्लीज़ कम, बी आर गेस्ट, नो प्रॉब्लम. हमने
आपने बात की इंडिया के कोई ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं या नेबर्स के साथ, तो आई कांट थिंक ऑफ वन कंट्री जिनके पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें, इंडिया हैज़ बेटर रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दैन Pakistan. We have invited the Bangladesh, the Bangladeshis to the G20 summit as well. They are an invitee, and the world for a very long time has been ignoring Bangladesh as a very unimportant country. But there are literally like 160 million people living there, and they are growing at a faster pace than India on so many parameters. So we take them very seriously, and we respect the fact that the Bangladeshis also kind of exercise their own strategic autonomy when it comes to so many things. But yes, the countries which are pretty much towing the line of the Beijing, and countries who have been trapped by the Chinese and they towed their agenda, we are better off without them, and we would not entertain them, beyond a certain extent. बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इसी तरह की जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ व्हाट इस्लामाबाद थिंक्स कि द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड इंडिया। और इंडिया अगर अपनी वो एजेंडा लेके चलना चाहता है तो वो चले, उसको हक है ऑब्वियसली। इफ़ इंडिया अगर चीज़ें समझता है कि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से अमूमन तो पाकिस्तान और इंडिया कहीं भी ऐसे किसी मल्टीलैटरल फोरम पे है ही नहीं है, अदर देन जी, सार्क। दो ही बड़े, एक ही बड़ा फोरम था, एससीओ तो वर्क कर रहा है, उसमें जी, पाकिस्तान और इंडिया बड़े आराम से काम कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का वैसे भी देयर इज़ नथिंग टू मैच इन टर्म्स के ना हमारा कोई कारोबार हो रहा है, ना बिजनेस हो रहा है। सो वी आर कम्प्लीटली अलूफ एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ रहा है, ना इंडिया को फ़र्क पड़ रहा है। डिस्पाइट इंडियाज़ प्रेशर और बड़ी कोशिश की एफएटीएफ में रखने की, लेकिन पाकिस्तान केम बिकॉज आउट ऑफ द एफएटीएफ एंड सो मैनी सो, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन मेरी जो जो डिस्कशन थी वो ये थी कि व्हेन यू गो फॉर एक ग्लोबल एजेंडा रखते हैं, देन यू हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एंड आई थिंक इफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करना है, आई थिंक इट वोंट अफेक्ट इवन इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी डिपेंडेंस नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती, बॉर्डर खुले होते तो और चीज़ होती। वो कि मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली इंगेज हों, आना जाना हो, लेकिन वही एक बात है कि शायद और मेरी एक ज़ाती ओपिनियन भी ये है, दिस इज आई वाज शेयरिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि if Pakistan has to talk with India, Pakistan needs to be economically strengthened, politically stable. That's the only way आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत हों तो जिससे मर्जी बात करें, इंडिया क्या, जिससे भी बात करेंगे। और देखिए, कारोबार इज इम्पॉर्टेंट, बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी से भी कारोबार कर लेते हैं, अगर आपको बुरा भी लग रहा हो तो इफ़ यू ऑफर समथिंग एंड इफ यू गेट समथिंग इन रिटर्न, तो ये करना चाहिए। बट एनी हो, इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम इंडिया। देखिए, आपको सब पता है कमर, आपको एक्चुअली सब मालूम है, बट आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपको वो बताए। You know, नहीं, the way you concluded, you pretty much know everything. What is wrong with your country, you know it better than anybody else. ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान का तो पता है ना क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत मैं भी कुछ समझता रहता हूँ, इधर उधर ध्यान रखता हूँ, थोड़ी बहुत ही चीज़ों पे समझने की जी, बट कोशिश करता हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग है ना। अब ये भी तो होता हूँ। है ना, आपकी प्रायोरिटीज़ भी तो कहीं पे आके कुछ सिनर्जीज़ होनी चाहिए ना। ठीक आपकी है। प्रायोरिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू बी, bridging that gap between the developed nations and the developing nations. We are projected to be having the fastest, GDP growth among all the G20 countries. तो ऑफ कोर्स आवर प्रायोरिटीज़ आर वेरी डिफरेंट, एंड हमारे जो मसले भी हैं वो आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो ठीक। हर इंटरेस्ट अपना, हर नेशन अपना इंटरेस्ट देखता है ना। हमारे जब प्रॉब्लम्स ही बिल्कुल अलग हैं, आपके प्रॉब्लम्स बहुत ही अलग हैं। आपके प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आपका जो आर्मी चीफ है वो हाफिज़ कुरान है कि नहीं है। हमें नहीं, यहाँ पे ये होती पाकिस्तान का होती है हमारा प्रॉब्लम नहीं आर्मी है। चीफ कौन है। ये नहीं, ये बट आप ये यू आर टू ये यू आपकी टू ये you know, आप no, 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 ये Kamar, hear कॉन्फ्लिक्ट me out. ये You कॉन्फ्लिक्ट kind of try to judge every situation based on religion. See, that's not how it works, right? नहीं नहीं नहीं, Religion is a आप part of इसको, your life. It cannot be made into a foreign policy or your way of life. That's not how ये it works. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये आप देखिए, एक आप अगर इंडिया सोच। को बड़ा फॉलो करते हैं तो हम भी तो करते हैं ना, थोड़ा अच्छी बहुत बात। तो हम छोटे-मोटे एनालिस्ट हैं,
बट थोड़ा बहुत तो हम भी फॉलो करते हैं ना, हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से, किस अप्रोच से चीजों को जज किया जाता है, कि आर्मी चीफ के लिए भी लोग किस तरह की चीजें एक आर्मी चीफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा जनरल हो वो मतलब टफ डिसीजंस ले सके, ही इज डिसाइसिव। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको किसी रिलीजन का नो हाउ है नहीं है। वी वांट देम टू अंडरस्टैंड जियो स्ट्रैटेजी बेटर, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो, today if you look at it, geostrategy, geopolitics, geoeconomics, everything is so intertwined. आप अगर सोचेंगे कि आप एक चीज को पकड़ के आगे चलते रहेंगे तो सॉरी, आई मीन द वर्ल्ड विल जस्ट मूव ऑन एंड यू विल स्टिल बी स्टैंडिंग राइट देयर। सही कह रही है, और मेरा चलें ख्याल पर ये है कि ट्रेडमिल पे ना चलें, बिकॉज कहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पे अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं समझता हूँ कि जो सियासत है उसमें मज़हब की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जी सियासत को सियासत के लेंस से देखना चाहिए। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मज़हब, क्योंकि पाकिस्तान मज़हब इस्लाम के नाम पे बना, सो इट विल ऑलवेज बी सेंट्रल। जो जो एक सिचुएशन है ये मेरे सियासत चाहे में करें, आई एम सेइंग आर्मी में ना लाए ना, बिकॉज तो आर्मीज वो जॉब इज नॉट दैट। वो देखें, आर्मी भी तो मुसलमान ही है तो उसमें भी तो है कि जो भी चीजें आ रही हैं, सो लेट्स हैव इट द वे इट इज। मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी इसी तरह, या किसी और दुनिया में भी, बाकी मुल्कों का मैं नहीं, इसमें हमारे नहीं है। आर्मी इज अ वेरी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन। दे कीप अवे फ्रॉम फालतू का और रिलीजियस पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। देव गॉट नथिंग टू डू विद इट। एंड चले मतलब मेरे लिए मैं तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी एलियन है कि आर्मी भी मुसलमान है। मतलब हम यहाँ पे हमारी जो आर्मी वाले हैं उन्होंने गुरुद्वारे भी बनाए होते हैं, मंदिर भी बनाए होते हैं, उन्होंने कुरान शरीफ भी रखी होती है। सो वी कम फ्रॉम वेरी यहाँ पे डिफरेंट भी वर्ल्ड्स, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि मुसलमान आर्मी क्या होती है और हिंदू आर्मी क्या होती है। वी आर नॉट लिविंग इन दी 6th सेंचुरी एनीमोर, आई थिंक। मेरा ख्याल है कि ये जो मजहब है इसको एक जाती चीज ही रहनी चाहिए। जी आई जी। एग्री विद यू ऑन दिस थॉट, लेकिन ऑब्वियसली नॉर्मली ये रह नहीं सकती। जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं किस तरह वो मजहब कर रहे होते हैं, अपना जा रहे होते हैं। जी, वो बहुत बुरे हैं। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये वो नहीं कह बहुत रहा। बुरे हैं। कोई बात आप नहीं, आप बात मतलब कर ले, मैं बाद में कर लेता हूँ कोई सी बात। कभी ना कभी तो हट, इतना मत सोचें यार, इतना मत सोचें। अब हैं तो हैं, अब जो हैं एडजस्ट करिए उनके साथ। दुनिया कर रही है एडजस्ट, आप भी करिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हर इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी तो ये कर रहे हैं। पाकिस्तान तो है ही मजहब के नाम पे बना हुआ, हम तो मैंने मैंने तो पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं की ना। मैंने कहा कि आप फौज में जो ये चीज लेके तो आते हैं ना, वो भाई थोड़े से अगर एक वियर्ड हो बंदे जाते ने हैं, थोड़ा सा हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है एब्सर्ड है तो ये प्रैक्टिस। सुने, एक बंदे ने हिफ्ज़ तो कुरान हम किया हुआ है तो थियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं। यू कैन नॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम सुने, पॉलिटिक्स इन एक दिस बंदे पार्ट ने ऑफ द वर्ल्ड। आई एम हाफिज टॉकिंग टू द कुरान आर्मी। है, अगर उसने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है तो इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नहीं है तो भाई, मैं फिर ये क्यों नहीं आप कह उसको रही यार, डिस्कस कर पूरा रही हैं? एहतराम है, ये बात मैं तो बिल्कुल नहीं फिर कह रही, क्यों आप वर्ड्स आपके लिए मेरे मुंह क्यों में ना डालें। प्रॉब्लम है? मैं ट्रीट कह रही हूँ कि ये दोनों प्रियोरिटी नहीं का होनी इससे क्या है? चाहिए। ये अगर प्रियोरिटी उसने नहीं होनी गीता चाहिए। याद की हुई है तो हमें उससे ये क्या प्रायोरिटी प्रॉब्लम नहीं है? होनी चाहिए यार। अगर वो उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये तो तो आई एम फिर नॉट होल्डिंग दैट अगेंस्ट हिम। वो मुसलमान है, अगर हाफिज कुरान है बहुत अच्छी बात है। बट तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लोगों को ये प्रियोरिटी नहीं बनानी चाहिए कि अच्छा अगर ये it हाफिज was कुरान है not a तो फिर बहुत priority अच्छी when बात he है। was selected as an army chief. Remember, he was selected as I an am army not chief saying the army because did he that. was. I am talking about the Pakistani analysts, Qamar. I have heard people on your own channel say this कि अरे वो हाफिज कुरान भी हैं, and I was like, Let what people has it say got to do a with the general, army? You madam, think very general, differently. a three-star general became a four-star general not because he is Hafiz, because he has certain credentials. उसने सर्व किया हुआ, उसकी उसकी वो करेक्ट जो उसकी जो ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ है उसको देखा गया हुआ है। सिंपल सी बात है। ये अगर किसी ने किया हुआ Well, है he तो has many skeletons in his closet. We will talk about it some other day if you can वो talk तो जाहिर about बात it. है, भारत को तो पाकिस्तान के किस आर्मी चीफ है मसला No, नहीं no, है। we observe Pakistan very closely. I observe अच्छी बात, Pakistan very closely. One of my favorite countries, I would say. अच्छी बात है। Um, चले मैडम, Pakistan is a very dear country to me. I watch them very closely. नहीं अच्छी बात है, देखना चाहिए, नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए। हम भी बहुत जी, कोशिश करते बिल्कुल, हैं, समझते रहें, बिल्कुल। सीखते रहें हमारे नेबर्स में क्या हो रहा है। एंड इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू एंड लर्निंग जी, फ्रॉम यू एज वेल। आपके पर्सपेक्टिव को समझने के हमेशा बड़ा मज़ा आता है। एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर दिस वंडरफुल टॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।